अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है अली हसन और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़ा इक़बाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 12 ग्रेट इन्वेंशंस वी शुड थैंक इंडिया फॉर। मतलब कि जो चीज़ें हैं भाई, इनके लिए इंडिया का थैंक्स करना चाहिए। जो ये 12 चीज़ें हैं, देखते हैं भाई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। We all know that India is one of the oldest civilizations in the world, with a super rich culture and history. But did you know that some of the stuff you use every single day was invented in this country? From the buttons on your shirt to the shampoo in your shower. Watch this video till the end to find out what brilliant things we can thank India for. Oh, and don't forget to subscribe to our channel and turn on post notifications to keep up with our updates. Alright, number 1, the zero. People in ancient times had always thought that there should be some sort of a sign to indicate nothing. Well, their worries were put to rest in the 5th century AD when Aryabhata, an Indian genius of math and astronomy, invented the zero as a symbol to represent nothing. It made addition, subtraction, and a slew of other mathematical operations a whole lot easier. You can see the oldest zero in existence carved in the wall of a temple in Gwalior, India. If you're not a big fan of math and the invention of zero seems like nothing too important to you, just think, without it, we would have no binary system and no computers. How do you like that zero now? Number 2, rulers. The Indus Valley civilization was using rulers in 1500 BC and earlier. Made from ivory, these rulers were found during excavations in what is present-day Pakistan and northwestern India. Apparently, they were widely used in architecture with pretty amazing accuracy. They had units corresponding to 1.32 inches that were marked with extremely precise subdivisions within 5,000th of an inch. Number 3, chess. Yes. This all-time top game for intellectuals is also an Indian invention. Its ancestor was called Chaturanga, and it was a strategic board game popular during the Gupta Empire around 6th century AD. Like the chess we know today, this game had various pieces with different value and capabilities. It also had an important king figure, and winning the game depended on the fate of the king. Another popular board game brought to us by India is Snakes and Ladders. The original version was called Mokshapat, and it was invented by a 13th century poet and saint by the name of Gyandev. The snakes stood for vices, while ladders were virtues. During India's time under British rule, the game made its way to England and later to the US. Number 4, plastic surgery. In the 6th century BC, an Indian physician named Sushruta created a huge reference book on medicine and surgery. It was one of the world's earliest works of its kind. Sushruta, often called the father of surgery in his home country, described the use of hundreds of medicinal plants and instructions for performing surgical procedures, including nose reconstruction and skin transplantation from one part of the body to another. The original method of rhinoplasty that involved taking a piece of skin from the forehead to reconstruct the nose is even still used today. But back then, nose jobs were done to help people who had been deprived of their noses as a punishment for theft or adultery. Ooh, how times have changed. Number 5, cataract surgery. Sushruta not only invented plastic surgery, but also performed the first cataract surgery. He used a curved needle to remove the lens from the affected eye. This revolutionary procedure soon became popular outside of India.
Patients and doctors from around the world visited the surgeon to get operations done and learn from his experience. The genius surgeon never turned anyone away. He said that he got all his knowledge from the god of Ayurvedic medicine, Dhanvantari. Number 6. Wireless communication. When you think of the pioneer of radio communication, Guglielmo Marconi probably immediately comes to mind. And that's for good reason, of course. He even received the Nobel Prize in Physics in 1909 for his innovative work. But Sir Jagdish Chandra Bose presented his discovery of radio communication waves to the public in 1895. He sent an electromagnetic wave across 75 feet at the town hall in Calcutta. The wave passed through walls, rang a bell, and ignited some gunpowder. Marconi used Bose's invention, the mercury coherer, as a pattern to build his operational two-way radio. Bose never patented his work, so he was only credited for his discovery a century later. Number 7. The USB. Wow. The USB, or Universal Serial Bus, is a way more recent invention than wireless communication, of course. It was brought to us by Ajay Bhatt, an Indian-American computer genius that was working as an engineer for Intel back in the 1990s. He came up with the idea of a universal port for devices, as he was putting an SD card into his computer. Remember those things? The device instantly became a huge hit. Bhatt himself didn't get money or official recognition for his invention, as he's always insisted that it was the result of teamwork. Today, the amount of USB devices used worldwide is over 10 billion items, making it the most used computer gadget out there. Number 8. Yoga. No. Hit that like button if you've ever tried yoga. I have. If you keep practicing it and see the positive changes in your life, then you should thank India for it. The first yoga guru was Lord Shiva, also known as Adi Yoga. People in northern India were practicing this spiritual exercise over 5,000 years ago. The word yoga was even mentioned in the Vedas, India's oldest sacred text. The Brahmins further developed the art of yoga and documented their experiences in a treatise with over 200 records. Indian Prime Minister Narendra Modi came up with the idea to celebrate Yoga Day on June 21st, and it's now an actual international holiday with millions of followers. Number 9. Natural fibers. Nothing feels better than the touch of natural cotton on your skin. We could have been deprived of this situation if it weren't for the bright minds of India. Unlike the ancient Greeks who wore animal skins, the Indians started cultivating cotton back in the 5th and 4th centuries BC. They used cotton threads to produce fabrics that soon became a huge hit in the Mediterranean and beyond. Jute and wool also have their origins in India, and flush toilets were one of them. Believe it or not, home toilets connected to a complicated sewage system with canals, irrigation, and smart water management existed in the land of spices over 5,000 years ago. Pure genius. Number 11. Shampoo. The word shampoo comes from the Hindi word shampoo, which means to massage or knead. The substance was invented in India in 1762 and was originally used for head massages, hence the name. The first shampoo was made of natural oils and herbs. British colonial traders fell in love with the idea and brought it back with them to England. It took years for the original head massage oil to evolve into shampoo as we know it today. But fact is fact. You have the Indians to thank for the beauty and cleanliness of your hair. Number 12. Buttons. Button. This clothing staple is at the top of our list. So simple yet revolutionary, the first buttons were found during excavations in Mohenjo-Daro, one of the largest settlements in the Indus Valley civilization, yet again.
Over 5,000 years ago, buttons were made of seashells and used as an ornament and not for fastening clothes. Lord. But they had 2 holes in the middle right from the start. So, are there any inventions on the list that you can't live without? Let's discuss it in the comment section. Be sure to hit like and share this video if you found it useful. And if you're new here, subscribe to our channel. सब्सक्राइब योर बटन जो हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने भाई देखा कि पहले भी इन कुछ चीज़ों का पता था, लेकिन अब तो भाई काफ़ी सारा पता चल गया कि भाई 12 चीज़ें जो हमने भाई कभी सोचा भी नहीं था कि जो कि भाई इंडिया से इजाद की गई हैं, इंडिया से भाई बनी हैं। और इन चीज़ों के लिए भाई देख ले काफ़ी ज़्यादा, अब सबसे पहले आया था भाई ज़ीरो, जो हम ज़ीरो लिखते हैं वो भी भाई इंडिया से, ये चीज़ें सब कुछ इंडिया से भाई आया है। और ये एक हटकर चीज़ें हैं भाई, अगर देखा जाए तो सोच विचार कीजिए असल भाई में थोड़ा। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, असल सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा महाभारत में जो शकुनी वाला सीन है, हाँ। जो चेस की बात करते हैं, हाँ। ठीक है ना, तो वो जो है ना, हाँ याद है ना, हाँ, बहुत तो वो अच्छी तो तरह उसका तो हमें जो है ना वो बिल्कुल आइडिया है कि ये वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है और उसको आगे मतलब एक डिफरेंट शेप्स में लेके आ गए हैं और डिफरेंट जो है ना वो आगे आगे जो है ना वो चलता गया। फिर अब जो है ना वो थोड़ी उस साइड के ऊपर निकल गई, वो गोरों ने उसको एडवांस तरीके से। लेकिन ये कि बहुत सारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत सारी चीज़ों का हमें भाई नहीं पता है। अब ये तो एक अलग बात है कि हर चीज़ के ऊपर एक अलग वीडियो है ना, वो उसकी डिटेल के साथ जो है ना वो आपको पता चल सकता है कि किस तरह उसकी ये कैसे इजाद हुई, किस तरह उसके ऊपर जो है ना वो बैकवर्ड उसकी हिस्ट्री है, ये चीज़ें। लेकिन ये कि भाई स्टार्ट जीरो से सही बात है। अब जो आर्यभट्ट थे ना भाई, उनकी मतलब कि आप हिस्ट्री पढ़ें तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो भी है ना, एक मतलब के जो हम यूज़ करते हैं या हम जो समझते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी बताई हुई थी। बहुत सारी चीज़ें उनके हमने मतलब कि उनकी हिस्ट्री पढ़े या उनकी डॉक्यूमेंट्री आप जाने तो आपको काफ़ी चीज़ों का एक नॉलेज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो की हुई थी। तो मैंने तो कुछ उनकी वीडियो भाई देखी भी, तो काफ़ी एक इंफॉर्मेशन वीडियो थी। और रही चीज़ें जो एक मतलब 12 चीज़ें जो थी ना, ये तो भी एक एडवांस चीज़ें हैं ना, मतलब कि डेली बेस पर बंदा एक यूज़ भी करता और इनका इस्तेमाल काफ़ी है। तो ये काफ़ी एक मतलब कि एक जो पे मतलब के पुराने लोग थे या एक सेंचुरी थी ना, उनमें काफ़ी एक मतलब कि उन्होंने एक पुराने तरीके से करते थे। लेकिन अब कुछ जैसा कि एक एडवांस चीज़ें आ गई, एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, तो उनको आप एक मतलब कि एडवांस चीज़ों से ले आते हैं। अब देखिए सर्जरी हम करवाते हैं भैया, होती है प्लास्टिक सर्जरी, वो आज से देख ले कि इतने साल पहले भाई वो हो चुकी है, जो कि भाई इंडिया में हुई है। ये चीज़ें हैं कि अब भी हमारे कुछ यहाँ से जाते हैं भाई, बाहर से करवा के आते हैं, वो भाई देख ले कि वो इंडिया से स्टार्ट हुई देखो ना, इसमें एक चीज़ और शायद नहीं मेंशन्ड, जो ट्यूब सिस्टम है ना जिससे बच्चे पैदा होते हैं, हाँ। वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो हाँ। वो भी वहाँ से जो है ना वो बिल्कुल बहुत वो भी हमें भाई महाभारत में दिखाया गया था, जो 100 पुत्र थे। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो शायद वो मिस कर गया। लेकिन ये कि शैम्पू वाला देख लें, वो एक हम अब खेलते हैं गेम लूडो की बैक साइड के बनी होती है, वो सांप वाली हाँ। तो इस तरह करके एक योगा तो हम खैर नहीं भूल सकते, वो तो इसके ऊपर अब तो वो खैर बहुत सारे कंट्रीज के अंदर चला गया, यहाँ तक कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था। सऊदीया वाला सीन तो सऊदीया में भी चला गया है। तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ऐसी हैं जो नहीं गुजरी, वो भी इसमें शामिल हो जाती है। और उसके अलावा जो भाई रेडियो था जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में भाई सुना जाता था। अब भी भाई मतलब सुना हर जगह पर जाता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में भाई चलता था, इधर बहुत छोटे होते भाई रेडियो ही हमने देखा है, वो इधर चल रहा होता था, ज्यादा उस पर सॉन्ग लगे होते थे भाई, सुनते थे, काफी घरों में होता था भाई, लोगों के पास होता था। तो देख ले कि वो भी भाई इंडिया से इजाद किया गया, ये चीजें भाई बता रहा था मैं। नहीं, अभी तो काफ़ी चीज़ें एक एडवांस हो चुकी है। योगा जो है ना वो एक मतलब कि इंडिया से इंस्पायर होकर एक हर कंट्री में आप मतलब कि वो एक मतलब उसको किया जाता है हर कंट्री में तकरीबन। तो वो एक जब भी उसका नाम होता है तो पहले भी इंडिया को मेंशन, लेकिन उससे सबसे बड़ी आप देख ले यूएस भी भाई, यूएस भी अपने डाटा इतना ज्यादा रखना होता है, ट्रांसफर करना होता है, पता नहीं इसकी और कोई टेक्नोलॉजी होती है या ना होती है। वो तो उसके फायदे है ना, लेकिन ये आपके आप स्टार्ट के ऊपर आए कि मतलब
इंडिया के एक बंदे का दिमाग था जिसने वहाँ पे, चलो वो अलहदा बात है, फॉरेन में बैठ के उन्होंने किया, लेकिन ये कि दिमाग तो उनका था ना। कोई हाँ, शक नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी इजाद है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी वीडियो थी अगर देखा जाए तो। बहुत सारी चीजें भाई चीजें बताई हैं, क्या हैं, बात है लेकिन ये। अगर देखा जाए तो बहुत सारी अभी वो चीजें जो बटन वाला सीन भी वो एक पुराने जिस तरह उन्होंने बताया कि चलता आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी, एक दो तो हम खुद देख रहे हैं कि वो उन्होंने मेंशन नहीं की। हाँ, शायद अगर कोई इंडियन भाई इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाता तो वो शायद इससे, लेकिन ये कि हर चीज़ की एक अपनी अपनी हिस्ट्री है, वो अलग है उसकी वीडियो देखने वाली। बिल्कुल भाई, तो वीडियो काफ़ी अच्छी थी, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।